Assalamu alaikum, very good evening, and from Patriot channel, your host Wakas Ahmed Noon. Today we are going to discuss the era of Babar Azam. Who is the better player? Babar Azam, Virat Kohli, Joy Root, Kane Williamson, Steve Smith, or Miandad, Sunil Gavaskar, Viv Richard, Brian Charles Lara, Sachin Ramesh Tendulkar, or Martin Crowe. So here we go. Today, Joy Root scoring heavily in England, in Sri Lanka, in India, and Babar Azam also scoring heavily in England, in Australia, in Sri Lanka, in New Zealand, everywhere. If you look around the bowling lineups of today teams, if you go deeply, if you go to see the bowling lineup in New Zealand, there is no proper threat of bowling of a spinner bowler from New Zealand lineup. No proper spinner in New Zealand lineup who can threat to Joy Root, who can threat to Babar Azam, Virat Kohli. Trent Bolt is a good bowler, bits and pieces. Neil Wagner is a good bowler, bits and pieces. Tim Southee is a good bowler. If you look into the South Africa side bowling lineup, there is no spinner in South Africa bowling lineup who could trouble Babar Azam, Joy Root, Virat Kohli, Steve Smith, any other batsman, or Ken Williamson. No spinner in South African side. There are good bowler bits and pieces, Kingston Rabada and Ngidi. If you want to see the England bowling lineup, there is James Anderson, old James Anderson, old Stewart Broad. They can't trouble Babar Azam, they can't trouble Steve Smith, they can't trouble Kane Williamson, they can't trouble Virat Kohli. And there is no spinner either in the England lineup who could trouble these all batsmen. And if you go look into the side of Pakistan bowling lineup, Shane Shafridi is a good ODI bowler, but not a test bowler. Hassan Ali is a good ODI bowler, not a good test bowler. There is no proper spinner in Pakistan lineup who can threat Steve Smith, Virat Kohli, Usman Khwaja, Joy Root, Kane Williamson, Rohit Sharma, not even that. If you look into the Sri Lankan bowling lineup, there is no what to discuss. If you look into the Indian bowling lineup, no what to discuss. So, guys, बात करने का मकसद ये था कि बाबर आजम जितना मर्जी स्कोर कर ले या विराट कोहली जितना मर्जी स्कोर कर ले, वो इंजमाम के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते, या वो सचिन तेंदुलकर के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते, या ब्रायन चार्ल्स लारा के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते, या वो जवेद मियांदाद के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते, या सुनील गावस्कर के पाए के, या G.Goach के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते, या सर आइजक वेवर रिचर्ड के पाए के बैट्समैन नहीं बन सकते। आप पूछेंगे क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो एरा था सचिन तेंदुलकर का, जो एरा था ब्रायन चार्ल्स लारा का, जो एरा था स्टीव वॉ का, जो एरा था मार्क वॉ का, जो एरा था मार्टिन क्रो का, और जो एरा था आप कह सकते हैं सनत जयसूर्या का या इंजमामुल हक का, उस एरा में आप देखें तो दुनिया के ऊपर उस वक्त दो स्पिनर जो लीड कर रहे थे, एक मुताया मुरलीधरन जिसकी 800 प्लस टेस्ट विकेट्स है, दूसरे शेनवान जिसकी 700 प्लस टेस्ट विकेट्स है। ये दोनों बॉलर क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक इतने खतरनाक स्पिनर नहीं है। क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक इतने खतरनाक स्पिनर नहीं है। ना ही बाबर आजम इन दोनों को खेला हुआ है, ना इस लेवल के स्पिनर मौजूद है इस वक्त दुनिया में, ना ही विराट कोहली ने इन दोनों को खेला हुआ है, ना ही केन विलियमसन ने इन दोनों को खेला हुआ है, ना ही जॉय रूट ने इन दोनों को खेला हुआ है, ना ही स्टीव स्मिथ ने इन दोनों को खेला हुआ है। तो कंपैरिजन नहीं बनता आज के बैट्समैन का आज से 20 साल 25 साल पुराने बैट्समैन के साथ, बिल्कुल भी नहीं बनता। तो बाबर आजम वगैरह लोग अच्छे बैट्समैन हैं, मगर वो इंजमाम के पाए के अच्छे बैट्समैन नहीं है, तेंदुलकर के पाए के अच्छे बैट्समैन नहीं, कोहली जरूर अच्छा बैट्समैन है, मगर वो ब्रायन चार्ल्स लारा के लेवल का अच्छा बैट्समैन नहीं है। दूसरी बात देखिए आप, ग्लेन मैकग्रा, सर कटली इमरोज, वसीम अकरम और वकार यूनुस। सचिन तेंदुलकर ने खेला है वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, ग्लेन मैकग्रा को, उसके बाद वो खेले हैं, आप स्टीवा को देख लें, स्टीवा ने फेस किया है द ग्रेट वसीम अकरम, द ग्रेट वकार यूनुस, द ग्रेट मुताया मुरलीधरन। आप ब्रायन चार्ल्स लारा को देख लें, उन्होंने ग्लेन मैकग्रा के खिलाफ
हंड्रेड्स किए हैं, डबल हंड्रेड्स किए हैं, उन्होंने मुरलीधरन के खिलाफ डबल हंड्रेड्स किए हैं, उन्होंने शेनवान के खिलाफ स्कोर किया है। तो दे आर मच अबव हेड देन दिस लॉट। दे आर गुड बैट्समैन, but they are not facing Muralidharan and Shenwan. They are just facing just bits and pieces bowlers. In this way, only one bowling lineup which is threatening at this time, and that is Australian bowling lineup. Pat Cummins, Josh Hazlewood, and Mitchell Starc. These are three good fast bowlers you can compare with the bowlers likes of Curtlim Rose, Wasim Akram, Waqar Yunus, Glenn McGrath. So, in this way, Sachin Tendulkar, Brian Charles Lara, and Zamulak, Steven Rajarwa are way ahead batsmen of Virat Kohli, Babar Azam, Ken Williamson, Joy Root, Steve Smith. And if we go further deep, 30, 40 years ago, then we see Miandad, Sunil Gavasakar, G.Goach Gavasakar, Richard. In this era, the fast bowling was above in all cricket history, fast bowling. There is Michael Holding, there was Malcolm Marshall, there was Joel Garner, there was Andy Roberts, there was Dennis Lilly, there was Jeff Thompson, there was Imran Khan, there was Sir Richard Hadley, there was Bob Willis, there was Sir Ian Botham, there was Kapil Dev. So they face the real quick, fast bowling. So they are also way ahead of this current lot. So I want to tell to these youngsters who are watching Babar Azam, Virat Kohli, who are watching Kane Williamson, who are watching Joy Root. I want to tell them who are just 20 years old, just 15-year olds, who just 22 years old, just 23 years old. I just want to tell them there were batsmen who are much better than them. They are Sachin Tendulkar, they are Brian Charles Lara, they are Miandad, they are Sir Sunil Gavasakar, they are Sir Richard, they are Inz Mamulak, Yunus Khan. So they have played the two greatest spinners, Mutaya Muralidharan and Shenwan. So बाबर आजम ने अभी इस वक्त क्रिकेट में कोई अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। अगर बाबर आजम स्कोर कर रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कोर किया जिन्होंने, ब्रायन लारा ने स्कोर किया है, बहुत बड़ी बात है। इंजमाम ने स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है। मियांदाद ने स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी बॉलिंग लाइन्स के अगेंस्ट स्कोर किया है। सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किया तो बहुत बड़ी बात है। वीरेंद्र सहवाग ने स्कोर किया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी बॉलिंग लाइन्स के अगेंस्ट स्कोर किया है। तो बाबर और कोहली और केन विलियमसन और जॉय रूट और स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, इस वक्त दुनिया की कोई भी इस लेवल की बॉलिंग नहीं है। 100 बॉलिंग है भाई, 100 बॉलिंग, कोई स्कोर नहीं है। मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है विराट कोहली से। मेरी नजर में मियांदाद और इंजमाम बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम से। मेरी नजर में मार्टिन क्रो बड़ा प्लेयर है केन विलियमसन से। मेरी नजर में ब्रायन लारा बड़ा प्लेयर है जॉय रूट से। सो आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। या हयो या कयूम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।